जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। सो आज हम देखने वाले हैं टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग केपीआई, जिसको ऑपरेशन भी बोलते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। तो ये केपीआईज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो वीडियो पे बने रहें। अगर आपने अभी तक क्वालिटी डिपार्टमेंट क्यूएमएस की केपीआई नहीं देखा तो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, ज़रूर देखें। अभी तक हमने क्वालिटी डिपार्टमेंट का केपीआई कंप्लीट किया है और आज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का केपीआईज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। समझते हैं व्हाट इज़ ए मैन्युफैक्चरिंग केपीआईज। मैन्युफैक्चरिंग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स केपीआई और मैट्रिक्स इज ए वेल डिफाइंड एंड quantifiable measure that the manufacturing industry uses to gauge its performance over a time. Okay, manufacturing companies especially use KPIs to monitor, analyze and optimize operations, often comparing their efficiencies to those of competitors in the same sector. The KPI number one is throughput. Okay, so this is probably one of the most fundamental KPI for manufacturing industry. The throughput KPI measure the production capabilities of a machine, line or plant. Okay, also known as how much they can produce over a specified time period. फार्मूला की बात करें तो number of unit produced divided by time can be hours or day. Okay, नंबर 2 पे है साइकिल टाइम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। द साइकिल टाइम केपीआई इज़ वेरी सिंपल इन नेचर, बट दैट डजंट मीन इट कैन बी मैनिपुलेटेड टू बी ए वेरी पावरफुल टूल इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। साइकिल टाइम इज़ द एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट। सिंपल, राइट? Maybe not as simple as you think. The cycle time matrix can be used to measure the time it takes to manufacture a complete product, each individual component of the final product, or even go as far as to include delivery to the end user. Thus, cycle time can be used to analyze overall efficiency of a manufacturing process on the macro scale as well as determine insufficiencies on a micro scale. Now formula क्या होगा साइकिल टाइम का? साइकिल टाइम इज इक्वल टू प्रोसेस एंड टाइम माइनस प्रोसेस स्टार्ट टाइम। ओके, नंबर 3 पे है डिमांड फोरकास्टिंग। What is demand forecasting? This manufacturing matrix is used by companies to estimate the amount of raw materials they will require to meet future customer demand. This matrix can be a little bit trickier for companies to fully utilize. It is highly dependent on uncontrollable external factor. Formula कैसे निकालेंगे? Demand forecasting. So projected customer demand means demand forecasting is equal to raw material into production rate. Number 4 पे है inventory turns. What is inventory turns? This is a measure of how many time inventory is sold over a specific time period and helps indicate resources effectiveness. Low ratio number indicates poor sales and excessive inventory, while high ratio number represent strong sales or insufficient inventory. Okay, how to calculate it? Inventory turns is equal to cost of goods sold divided by average inventory. Number 5 पे है प्रोडक्शन attainment. This production performance matrix measure production level over a specific time period and calculates what percentage of the time a target production level is achieved. कैसे इसको निकालेंगे? प्रोडक्शन attainment is equal to number of period production target meet divided by total time period. नंबर 6 पे है कैश टू कैश साइकिल टाइम। ये क्या होता है? दिस इज ए टाइम बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग केपीआईज मैट्रिक्स। इट्स मेजर द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम एन इनिशियल कैश आउटले फ्रॉम मटेरियल इन्वेंट्री और ए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट
until the company receives cash from its customer for its product. This KPI is typically measured in a day. Okay, कैसे इसको निकालेंगे? कैश टू कैश साइकिल टाइम इज इक्वल टू इन्वेंट्री सेल डेट माइनस इन्वेंट्री परचेज डेट. अंडरस्टैंड? 7 नंबर पे जो है हमारा अवॉइडेड कॉस्ट. ओके, what is meaning of avoided cost? This doesn't mean you can just avoid paying bill and keep all the profits. The avoided cost manufacturing matrix is an estimate of how much money you save by spending money. The most common example is how much money is spent on machine maintenance versus repair cost. If a machine were to break down plus the lost production value associated with the repair downtime. So कैसे निकालेंगे इसको? Avoided cost is equal to assumed repair cost plus production losses minus preventive maintenance cost. Okay, 8 नंबर जो हमारा है वो है चेंज ओवर टाइम. इसका डिफिनीशन कैसे हम समझेंगे? एट द most basic level, change over time represent the amount of time required to switch from one task to another. Okay, typically in manufacturing it represents the amount of time lost from switching a production line from one product to another product. However, it can also represent the amount of time lost during shift changes. Okay, सो चेंज ओवर टाइम हम कैसे निकालेंगे? चेंज ओवर टाइम इज इक्वल टू नेट अवेलेबल टाइम माइनस प्रोडक्शन टाइम. KPI नंबर 9 पे आता है टॉक टाइम. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसको डिफिनीशन से कैसे समझेंगे? ये अगर आप 6 सिग्मा में स्टडी किए होंगे तो उसमें भी आता है टॉक टाइम क्या होता है. दिस इज ए वेरी यूजफुल मैन्युफैक्चरिंग KPI when scheduling production order or deciding whether to take an order from a client. Takt time is the maximum permissible amount of time that can be spent manufacturing a product while still meeting a client's deadline. Time is equal to net available time divided by customer daily demands. Okay. 10 number KPI is production department is machine downtime rate. मशीन डाउन टाइम रेट क्या होता है? वाइल दिस इज commonly used as a manufacturing matrix to give general snapshot of how operation is going, it doesn't paint a full picture. Machine downtime is a combination of both scheduled downtime and unscheduled downtime. Machine downtime rate is equal to downtime hour divided by downtime hours plus operational hours. Okay. KPI नंबर 11 है परसेंटेज प्लांट मेंटेनेंस. ये क्या होता है? दिस प्रोडक्शन मैट्रिक्स इज यूज टू एनालाइज द रेशियो ऑफ शेड्यूल मेंटेनेंस अगेंस्ट द अनशेड्यूल्ड मेंटेनेंस. द KPI इज यूजफुल इन आइडेंटिफाई व्हेन मोर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन एसेट्स. फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज प्लांट मेंटेनेंस इज इक्वल टू प्लांट मेंटेनेंस hours into 100 divided by total maintenance hours. KPI number 12 is downtime to operating time. So downtime to operating time क्या होता है? Downtime percentage show the amount of time production was interrupted due to unplanned stop or breakdowns. Okay, so इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? Downtime percentage is equal to total downtime divided by total production time. KPI number 13 is capacity utilization. Okay, capacity utilization assesses the percentage of available production capacity being utilized. Okay, how to calculate it? Capacity utilization is equal to actual outputs divided by maximum possible outputs into 100. KPI number 14 is first pass yield. This is one of the most fundamental production KPI. It calculates the percentage of products manufactured to specification the first time through the KPIs. This means that they do not require any rework or become scrap. FPY rate is very desirable for any company. Okay,
How to calculate it? FPY rate is number of unit produced without rework or without repair divided by total unit produced into 100. KPI number 15 is overall equipment effectiveness, OEE. OEE measures the efficiency of equipment and machinery in the production process considering factors such as downtime, production speed and production quality. How to calculate it? OEE is equal to availability into performance into quality. KPI number 16 is manufacturing cost per unit. It is very important that you know the total cost associated with manufacturing a product on a per unit basis. Without it, you would not be able to price a product properly. This KPI take into account all cost associated with the production and divides cost by the number of unit manufactured. Typically, costs include materials, overhead, depreciation, labors, etc. So formula क्या है? Manufacturing cost per unit is equal to total manufacturing cost divided by total units. KPI number 17 is maintenance cost per unit. ये क्या होता है? The production matrix is often overlooked as people tend to consider maintenance cost to be an overhead items. However, it is an important lean manufacturing KPI to take into consideration when trying to optimize efficiency. This calculation takes the total cost of maintenance, means both preventive and emergency, and divide it by the number of units produced for a specific time period. So formula यही है, maintenance cost per unit is equal to total maintenance cost divided by number of unit produced. KPI number 18 पे आता है overtime rates. Okay, overtime rates क्या है? This matrix compare the amount of overtime worked by employee to the amount of standards hour. Overtime rate is equal to overtime hours into 100 divided by regular hours. KPI number 19 is scrap rate. It's very important in production department. Scrap rate represents the percentage of defective or unusable product produced during manufacturing. फॉर्मूला क्या है? स्क्रैप रेट इक्वल टू टोटल स्क्रैप डिवाइड बाई टोटल यूनिट प्रोड्यूस इनटू 100. ये हम ऐसे भी देख सकते हैं कि कितना ऑर्डर हमारा कितने टाइम पे जा रहा है, ऑन टाइम जा रहा है, उसका भी हम एक KPI फ्रीज कर सकते हैं. सो OTD इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन टाइम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू 100. सो फ्रेंड्स, ये 20 KPIs मैंने आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ बताया है विद फार्मूला. ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ें और इम्प्लीमेंट करें अपने ऑर्गेनाइजेशन में. अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो प्रिपेयर करें. आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें. जय हिंद, वंदे मातरम.